दधिक्रावणोकारिखं विष्णुरसस्वाजिनः सुराभिनमुखाकरप्रणाय गुङ्खितारिखत्तदधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते घृतस्नानं घृतं मिमिक्षे घृतमसजोनि घृते श्रुतो घृतमसदामनुसदमावहमातस्वाः घृतं ऋखवः वक्ष्यव्यम् भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते मधुस्नानम् ॐ मधुपादारितायति मधुक्षरन्ति सिन्धवमाभिरिनः सन्तो भजेहि मधुनकमुतुहसो मधुमत्पार्थिवघोङ्ग्रजः मधुदेवरास्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यमाद्भिर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानान्ते शर्करास्नानम् अपागुंरसमुद्भयसगुं सूर्यसन्तगुं समाहितम् अपागुंरससजोरसस्तम्भो गृह्णामूतममुपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वं जुष्टं गृह्णामेखते ज्योतिरिन्द्रायधं जुष्टतमं शर्करास्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानम् ॐ जाहा फलिनिर्जा फला पुष्पाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिप्रसदास्तनुमुञ्चन्तगुंहसः भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि श्रेष्ठते लक्ष्मीष्टपत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम् निष्ठान्निखाण मुम्बैखाण सर्वलोकं मयिखाण सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः पार्जन्यः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियतां ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रौदश सरस्वती तु पञ्चदाशो देशे ववत्सरेद पञ्चामृतमयानितं पयोदधि कृतं मधो शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः मिलितविचार पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः अथ अभिषेकम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यभौतो दैहवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः जातयसो शिवतमा सेवां बभूवते धनुः शिवा सरभ्या यादवतया नो रुद्रम्रीडय जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्व सन्तमया गिरिसन्ता विजागसे हे जामि सोङ्गि हसन्दव हस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्किरित्रतां कुरु माहि गुंसे हे पुरुषं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसे जधानः सर्वमि जगदयक्ष्मगुंसु मनासद् अद्य वौचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यविखक् ऐंस सर्वान् जाम्भयन्तु सर्वाश्च जातधान्यः असोजस्ताम्रो अरुणतप्रभुः सुमङ्गलः जे चे मा गुं रुद्राभितो दच्छश्रिताः सहस्रशो वैखागुं हेडैमहे असोजो वसर्वति नीलग्रीवो विलोहिता उतैनं गोपा अदृशानुदृशनुदाहयः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वानस्तमुभयोरार्तुर्जाम् जास्तते अस्तैखवा परार्ता भगवो वपावत तधनुष्ठघुंसहस्राजसते खुदे निसर्जशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं ननुः कप्रदिनो विशल्यो बाणवागुङ्गुतः अने
हस्ते बहुवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तुमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानाय तथाय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुव्यान्तपदन्वने परिते धन्वान् हेत्र्यस्मान् वृणक् विश्वतः अधो ज इकुतिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं सम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरन्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्यदिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शक्मिञ्जराय द्विखिमते पतीनां पतये नमो नमो बब्लुसाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशाय पपीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्येते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षत्राणां पतये नमो नमः सुताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय खदीनां पतये नमो नमः उचैर्घोखाय क्रन्दय देपतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभिताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निव्यधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभायस्ते निखङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निखङ्गिणाय खोदिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायुनां पतये नमो नमो निचेरविपरिचराय रणीयानां पतये नमो नमः श्रीकायभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णातां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यो कृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेखिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इखुमद्भ्यो धन्वाभ्यस्तवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यस्तवो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विस्रजद्भ्यस्तवो नमो नमस्ताभ्यो विद्यद्भ्यस्तवो नमो नमः आसिने शयानेभ्यस्तवो नमो नमः स्वापद्भ्यो जाग्रद्भ्यस्तवो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यस्तवो नमो नमः सवाभ्यः सभापतिभ्यस्तवो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यस्तवो नमः नम आभ्याधिनीभ्यो विविधन्तिभ्यस्तवो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतिभ्यस्तवो नमो नमो ग्रीष्मेभ्यो ग्रीष्मपतिभ्यस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमो नमो महद्भ्यः कुल्लकेभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो अरथेभ्यस्तवो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यस्तवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यस्तवो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहितृभ्यस्तवो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यस्तवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यस्तवो नमो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो निखादेभ्यस्तवो नमो नमः इकुकृद्भ्यो धन्वाभ्यस्तवो नमो नमो मृगायुभ्यः स्वानिभ्यस्तवो नमो नमः स्वाभ्यः स्वपतिभ्यस्तवो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वाने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो विदुष्टमाय च खुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वरेखीयसे च नमो वृद्धाय च सामृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आसवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च शिभ्याय च नमः ऊर्म्याय च अवसन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च पूज्ञाय च नमः शोभ्याय च प्रतिशोध्याय च नमो जाम्याय च क्षम्याय च नमः उर्वज्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसन्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आसुखेणाय च सुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रवृषाय च नमो दूताय च हरित्याय च नमो निखङ्गिणे च खुदिमते च नमस्तिक्षणवे खवे चायुधिने च नमः
स्वायुधाय च सुदधन्वाने च नमः श्रोत्याय च पथ्याय च नमः कार्ट्याय च निप्याय च नमः शुद्ध्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैसन्थाय च नमः कुप्याय च वाट्याय च नमो वार्ख्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेक्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे बधाय च दूरे बधाय च नमो हन्त्रे च हनियसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्तराय नमः संभवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च तरणाय च नमः आतर्याय च चालाध्याय च नमः सक्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवय्याय च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किकुंशिलाय च क्षणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घोष्ट्याय च गृहज्याय च नमस्तल्प्याय च गृहज्याय च नमः काट्याय च गोहरेष्टाय च नमो हृदज्याय च निवेक्ष्याय च नमः पागुंसभ्याय च रजस्याय च नमः शुक्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च नमः ऊर्व्याय च शोर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णसध्याय च नमो ओ पागुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुंहृतेभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिरतेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्वदे दरिद्रनीललोहिता एषाम्बुषाणाम् येषां वशूनां भैर्मारों येषां किञ्चनामवत्त जाते रुद्रां दनो शिवा विश्वाः वेघजि शिवारुतसवेघजितयानो मृडजीवसे इमा गुंरुद्राय वसे कप्रदिने क्षयद्वीराय प्रबरामये मदिं जधानः सर्मसद्विपदे चतुक्पदे विश्वं पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतानो मयस्कृधे क्षयद्वीराय मनसा विधेमते यच्छं च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मानोक्षन्तमुतमानोक्षितां मानोवदेहि पितरं मोतमातरं प्रियां मानस्तनु स्व रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो स्वेखुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधिर्हविक्मान्तो नमसा विधेमते आरात्रे गोन्न उत पुरुषाह्ने क्षयद्वीराय सुमानमस्मै ते अस्तु रक्षा च नो अधे च देवबृहद्या च न शर्म यच्च द्विर्विहा स्त्रोहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहान्नु मुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मान्निवपन्तु सेना परेणो रुद्रसहेतिर्वृणक्तु परित्वेघस दुर्मतिरधायोः अवस्थिरामघवद्यस्तु नुह्वमीडुस्तोकायतनयाय मृडय मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधनिधाय कृतिं वसान आचर पिनाकां विव्रादागहे विकिरिद्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जाते सहस्रगुंहेतयोन्यमस्मान्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बहूवोस्तव हेतयाः तासामिशानो भगवः पराचिनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो जे रुद्र अभिभूम्यां तेघागुं सहस्रयोजने बदन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्तर्णवे अन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाः सिद्धिकण्ठाः सर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाः सिद्धिकण्ठादिभगुं रुद्र उपसृताः जे वृक्षेषु शक्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः जे भूतानामधिपतयो विशिखासः कप्रतिनः जे अन्येषु विविदन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्न जे पथाम्बति रक्ष एलवृद्ध आयुर्योधः जे त्रेथानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निखङ्गिणः ज एतावान्तसभोया गुंससदि स्वरुद्राभितस्थिरे तेखागुं सहस्रयोजने बदन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां जय अन्तरिक्षे जय देवी जय खामन्नवातो वरखमिखावन्तो तेभ्यो दश प्राचिर्दश दक्षिणा दश प्रतीचिर्दशोदीचिर्दशोर्ध्वा तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेजं दुह्मोजश्च नो दष्टे त्वां मे मे ददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् जो रुद्रो अग्नौ जो
रुद्रो अप्सु य ओघधीशो यो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टो हि यासेषु सुधन्वायो विश्वस्य जयति वेगजस्य यच्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमो भिर्देवामसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेगजाजो अयगुं शिवाभिमार्सनः जेते सहस्रमयुतं पासा मृत्युमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् जजामहे मृतवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे प्राहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्ययस्व ॐ नमो रुद्रो मां विशान्तकः तेनानेप्यायस्व सदाशिवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमः निदन्तपतये नमः ऊर्धाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वालाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतस्योमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गकं स्थापयति प्राणिमन्त्रं पवित्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाता वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रथमनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सदाशिवम् वर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः जय हर 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 महादेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् औरुबारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिवजी चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति
दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफणी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैं नामात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराहु या छवि को कही जात देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी तुरत शदानन आप पठाय लव निमेष महामार गिराय आप जलंधर असुर संहार सुयश तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबही कृपा कर लीन बचाई किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी दान नमः तुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदाई वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनाद भेद नहीं पाई प्रगति युदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर वहे बिहाला कीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंका विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए चितवन जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सब के घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकार यही अवसर मोहियान पारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहियान बारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु अब संकट भारी धन निर्धन को
देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करहु तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाया। जो यह पात करे मान लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पात करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पात नसावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पात करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर चति है मंत्रित, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की। नमामि शमीशान, नमामि शमीशान। निर्वाण रूपम, बोले शंकर भगवान। नमामि शमीशान, निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल
कालं कृपालं गुनागार संसार भारं नतोऽहं गुनागार संसार भारं तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभाले कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादीशचर्माम्बरं मुन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूरनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावदौ मानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणं भजन्ति हलोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॐ नमः शिवाय 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 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। ओम पंचाक्षर स्तोत्रम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गौरी वदनाल वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय तस्मै शिखाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं प्रोक्तं विप्रानहर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदतः। बोले शंकर भगवान की। Today is Govardhan Puja, a day dedicated to Lord Krishna in this holy month of Kartik. I'd like to read a little bit about the importance of that today from the Bhagavatam and invoke the Lord today with a few lines from the Govinda Damodara Stotram to Bhagwan Shri Krishna. We are in the holy month of Kartik, as you all know, and in this holy month of Kartik, there are a lot of things that happens. Chaturmas comes to an end. The 4 holy months, they come to an end in the month of Kartik. Remember, we started off with Shravan Mas. I'm sure you can't forget that, in July 5th. And then we're going to come to a conclusion after Kartik Purnima on the 26th. This is called the Chaturmas, the 4 holiest months of the Hindu. This month of Kartik, in this month of Kartik, what makes it so beautiful? We have Diwali, or Deepavali, which we celebrated yesterday and continues to. We have also the auspicious Tulsi Vivah, which is coming up on November 24th. This is a very beautiful time in the year for Hindus. Our celebration never stops, spirituality never stops, and puja never stops. Today is the day when Sri Krishna Bhagwan lifted the great Govardhan mountain. Not too long ago, in August, September, we read from the Srimad Bhagavatam. And the Katha from the Puranic teachings tells us that when Sri Krishna Bhagwan was a boy, that his father, who was a cowherd,
Nanda Baba. One day, Nanda and all his followers in the village, they assembled lots of items, puja items and so on, fruits, flowers, and they were heading in a particular direction. Krishna Bhagwan, who was very curious and who came into this world, by the way, to break off all the useless traditions. I think you will agree with me that we experience a lot of traditions that we will never understand, right? Traditions have meaning, don't get me wrong. You have to have certain things done in a certain way. But there are a lot of them that makes no sense because there is no explanation for them. You know, in a Hindu wedding, I would say, to my knowledge, about 50% of the things that people do in the Hindu wedding, about 50%, are actually tradition-based. Now, why is that? Because we have come from a place that, you know, in India, every 23, 24 kilometers you drive, you find a different language, you find different traditions, you find different culture. So when all those things, I mean, when we talk about India, in Guyana, if you go to different villages, even in the county, the way how we do wedding in Borbies, even in Borbies, if you do weddings in Blackbush, as opposed to if you do wedding in Cotton Tree, night and day, total different. I'm not saying one is right and one is wrong. If you go to Essequibo, they do things differently. If you go up in Demerara, Georgetown side, they do things differently. Even little Guyana that we live in, less than 750,000 people, things are done so differently than the other places. So a lot of what we do is about traditions. Not even talking about South India. If you go South Indian wedding, that's a whole day and a whole week. The whole day of the wedding and week preparation. The point is, a lot of what we do is tradition based on our geographical location, on our family customs, and so on. And there's nothing wrong with that. However, the meaningless ones, Lord Krishna came to break. He came to break a lot of the meaningless traditions. So in this part of the book, Dasham Skanda, book 10 of the Bhagavatam, Nanda Baba was going to do all his puja, and he asked his father, why are you taking everything that we have to go pray to Lord Indra? And the father explains, son, you're very young to understand, but I'll explain to you. Lord Indra is the Lord of the rains, and we are farmers. And without the rains, you know, we cannot survive. The rains have to fall at the right time, at the right place. You know how many times we used to have Havan outside? And only on the day of the Havan, the weather forecast will show rain will fall. Only on the day of the Havan. And we are all very worried. The rain is going to fall, all the Havan is going to wash away, people are going to be disappointed, you know, the usual thing. And one old lady came one day and said, Pandit Harat, how do you know that, I mean, the rain forecast show rain will fall that day. But how do you know at that time when you're doing the Havan, at that place in Brampton, if the rain will fall then? And I said, truth. Because Brampton is a big place. And is the rain going to fall exactly at that spot and at the same time when we're doing Havan? So Nanda Baba explained this to Krishna. Krishna, Lord Indra has to pour the rains on us in order for the crops to grow. If too much rain comes, people who understand gardening and so on, you know, if too much rain comes, you know, it wouldn't grow. Or if little rain falls, you have to put in your own water. So it has to be the right amount of rain. And he says, we have to pray to Lord Indra for this to happen. Lord Krishna Bhagwan now spoke to his father. He says, Pitaji, Karmana jayate jantu karmane neva viliyate sukham dukham bhayam kshemam karmaneva bhipadhyate asti chedishvara kaschit
फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्याकृतुं प्रभुर्ति सः. Bhagavan Shri Krishna explained to his father. He says, Father, karmana jayate jantu karmaneva viloyate. He says, Father, everything in life is a result of karma. Every single thing in life. Sukham, dukham, sorrows, sukham, happiness, sorrows, fear, anxieties. Everything happens by the force of karma itself. And everyone, of course, goes through that period in their life. Whatever we have done, you all know the basic rule of this. Asti chedashvara kaschit falarupanya karmanam kartaram bhajate sopi nahyakyetu prabhu hi saha. Falaswarup means the fruit of the actions we sow. And so he explains in deep what karma is. I think we all know that. We don't want to go too much into that. He says, the sun does not shine upon someone without their karma. The moon cannot be experienced without our karmas. We are here today because of our karma, and people are not here today because of their karma. Sickness, diseases, healing, health, all of this occurs only because of our karmas. My Lord, my Father, he says, the rains fall because of karma, the sun shines because of karma, crop grows because of our karma, and crops die because of our karma. And all of this he explained to his father, that nothing happens without our karma. We are all writing our life. We are all writing our life. Natna puro japan pada nagrama nagraha vayam. There are neither cities, nor territories, nor villages, nor houses in our possession. We have ever had our abode in the forest, dwellings as we do in the woodlands. O Lord, my Father, it is best for us to worship nature itself. And so he says, my Father, let us go and worship nature. Hindu dharma, Sanatan dharma, or whatever we call it these days in the academic world, we have a deep appreciation for nature. We do something called Navagraha Puja. Navagraha Puja, unfortunately, we only hear or pay attention to it when we are sick. Something goes wrong, quick time, open book. You get Shani Graha, Rahu Graha, Ketu Graha, you have to do Black Isle and all these kind of things. Then we have a little appreciation for what Graha Puja is. Graha Puja is very important in our lives, don't get me wrong. Very, very important in our lives. However, equally important is how we treat this planet that we live on. I don't know where, Mercury is and Venus is and all these kind of things. I live on Earth. And it is my responsibility as someone living on this planet to care for it. To care for it. Now, you don't have to answer me, but I have to ask you, do you all recycle? Do you put your garbage in the garbage pile and the recycle in the recycle bin? Do you put your food in where food has to go to dispose of? Right? If we don't do those basic things, Graha Puja means nothing to us, because we are contributing to destroying this planet. The key here is to appreciate nature, to plant trees, to appreciate what is around us, and let this planet flourish. Let this planet flourish. Hinduism drives social issues as well. Social issues. The issues that we have in our city, in the city that we live in. I don't know where everybody lives. I know in the city that I live in the city of Brampton, very soon conservation will not be part of the future. Conservation will not be part of the future. Greeneries, land,
air, space, it will not be there. Because the aim of our city right now is to what? Everybody knows? Is to build houses on all the roads. You're literally driving on the road and there's a house beside you. And the question comes, where are you going to put people upon if you don't build houses? Well, you know, it's a lot more questions than that. The point is, this world is becoming a concrete jungle. Toronto is officially called a concrete jungle now. I hope all of you know that. And it is what it is. But we only are thinking about today and tomorrow. That's it. Appreciating nature is a Hindu philosophy. Is a Hindu philosophy. Look at what we do. We worship Tulsi. We worship a tree. On November 24th, all of us will assemble from all parts of the city. We'll come here and we have Tulsi Vivah. We are marrying a tree to a stone. We show reverence to the trees. We show reverence to the stones because all of them have a part in our lives. We worship trees. We throw water on trees. All neem leaf we worship, neem leaf tree, coconut tree, all of them we worship because they are equally important in our life. We depend on them so much. Bhagavan Shri Krishna explained this philosophy to his father. He explained in detail about the relevance of nature. And he says, Father, if at all we should worship anything, we should worship nature. Let's go worship the mountain Govardhan. When the father asked him, why the mountain? He had to explain the whole origin of rains. And those of you who understand the origin of rains, of course, very simple. Everybody know that. Learned that in primary school. So he explained them the origin of rains. And father says, okay, Krishna, but you know, if something goes wrong, it's your fault. He says, no problem. And so, Kalatma Bhagavatam Shakrapadi Jijam Sataha. He says, Father, let's go. And they all went and they did the Govardhan Puja, which means they prayed to the mountains, right? Lord Indra, of course, you have to understand this. This is a teaching I've always given you. Jealousy is not for those who don't have. Jealousy is not only for the poor. Jealousy is experienced at the highest level. When Raja Indra saw that they were performing puja to a mountain, he became very jealous. He said, look at this. The mountain is going to take away my presence and my power. So all of you know what he did. He showered rains and thunder and rains and thunder. And when it was unbearable, the Lord Shri Krishna lifted, Giriraj Bhagwan lifted the mountain with his little finger. All of you know why his little finger, not his whole palm. He lifted it with his little finger. And why with his little finger? Ityoten hastena kritva govardhana chulam dadhara leelaya krishnas chakrami balakah ataha bhagavan gopan hemmatata vrajokasah yathopajodyam vishata girirakarta sagodhanah. To display how powerful God is, to display how powerful the Lord is, he did not lift it with his palm or with his two hands or anything like that. He lifted the entire mountain with his little finger, just to show how powerful he was. And when he lifted the mountain, of course, everybody came. The Lord practiced inclusion as well. You know, when he lifted the mountain with his little finger, all the gopis came with sticks and they were putting it under the mountain to hold it up. And you know, he was looking at all of them and he could have said, you know, it's not necessary, all of you go away, I can do this on my own. He allowed them to put their sticks. It wasn't necessary, but he just allowed them to be there. Inclusion. He allowed everyone that they're doing to feel that they're doing something good. And the Lord Indra poured rain and thunder for 7 days and 7 nights. And the Lord held the mountains for 7 days and 7 nights. And when Lord Indra couldn't pour more rains,
You know, everything that has a beginning has an end. All of you know that. Including sorrows, including pains. Everything that has a beginning has an end. One of the simple mantras I've always taught people is you tell yourself when you're going through any form of sorrows, this moment will pass. This moment will pass. This day will pass. There is only so much torment that we can go through in life. What we have to do is we have to be prepared. You can't just sit and wait for it to pass, though. You have to be prepared. There has to be faith. There has to be devotion. There has to be unflinching faith. Don't flinch when sorrows come. Face it head on. This moment will pass. This day will pass. Everything that has a beginning has an end. Happiness has a beginning and has an ending, and so does sorrows. But we have to remember that, remember this teaching when the sorrows come. It may sound very nice today, like a Facebook quote, but it is only beneficial when sorrows come. If we can remember it then it is very applicable. When Raja Indra could not shower more rains and thunder, his pride was broken, his pride was shattered. There is no evil that is too strong for God. Bhagavatam tells us, there is no evil that is strong enough to win the force of the gods. There is no wrath by any demonic forces that is more powerful than the blessings of God. There is no more blessing that is more uplifting than the blessings from God. There is no rain that can shatter or shower away your bliss when Krishna's hands are over you. And finally today, whatever mountains we are carrying in our lives, whatever mountains we are fetching on our shoulders, or more painfully, our head, that mountain is meant for you to climb and admire. It is not meant for you to fetch. This is the message of the Bhagavatam. This is the message of Lord Krishna. Whatever it is that we are fetching is meant to put on the ground and admire and climb. Shri Krishna Bhagavan lifted the mountain, broke the pride of Raja Indra. Raja Indra came back and of course sang praises to Lord Krishna. And he extolled the Lord. He extolled Govardhano Ghrite Shailam Asarada Rakshite Vraje Golokada Vrajat Krishnam Surabhi Shakra Evacha. And he praised Lord Krishna. O Krishna, full of grace and bliss, I bow down to you, the one who have shattered my pride. Your essential character, O Krishna, consisting as it does of pure sattvic qualities, is uniform, full of wisdom, and untouched by me or any other forces. From that day, today actually is that day when Krishna Bhagavan lifted that mountain. And so we sing a few verses of the Govinda Damodar Stotram to Bhagavan Shri Krishna and ask him to bless all of you. If you are carrying any mountains in your life, please let it go. You should leave the temple today with your shoulders lighter than it came. There should not be any headaches and pains because of stress and worries. You think about happy things, happiness you will be experienced. You think about sorrows, pain and stress will come. Let us chant these few shlokas only. Govinda Damodar Stotram is very long. I'm sure all of you memorize it. You can sing it by memory, but we sing it just one or two shlokas to praise Bhagavan Shri Krishna. Agre Agre Kuruna Matapandavanam Dukha Sanena Hritavasrakesha
कृष्ण तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैतभारे भक्तानुकाम्पिन् भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत दध्याधिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैयालाल भगवान की जय। Bhagwan's blessings to all of you. We'll invite you now on the altar to bring prasad or flowers or whatever you have to offer to the Lord, Bhagwanji. And while this is happening, we can have bhajans. जय भोला बंदारी शिव जय भोला बंदारी जय भोला बंदारी शिव जय भोला बंदारी जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी
जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी जय भोला बंदारी शिव जय भोला बंदारी जय भोला बंदारी जय भोला बंदारी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय A gentle reminder, next week, Friday, which is November 24th, we have our Tulsi Vivaah program here at the temple. That is the nice wedding ceremony between Mata Tulsi, the plant, and the stone Shaligram. And then on Sunday, the 26th, we have Kartik Purnima, or what we call Tirat back in Guyana, or in Trinidad, Tirat. That day, we bathe Mata Ganga Murti and Bhagwan Sri Satyanarayan as well. So we hope to see all of you on those days for Kartik Snan, Kartik Purnima, and Tulsi Vivaah as well. Thank you all. Stand for Aarti now. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ओम जय शिव ओंकाराय स्वामी हरे शिव ओंकाराय जय शिव ओंकाराय स्वामी हरे शिव ओंकाराय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजन ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 बजते सोहे स्वामी 10 बजते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप
तारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, श्रीवर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवर देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरण श्री माता दुर्गा की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण स्वामी जी की, सूर्यनारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, संध्यासैनम आरती की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सुशान्तिर्भवतु। भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति।